एक्चुअली स्वयं का जो एनपीटीएल है, ठीक, एनपीटीएल का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका वेबसाइट का नाम है swam.gov.in/mycourses। जब एंटर करोगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद ऑल कोर्सेस, ओके, देन ये सारे सारे रहेगा। लेट्स से हमारा कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देन आपका अंदर आएगा सब कैटेगरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जितना भी कोर्स अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन है सारे के सारे खुल जाएंगे। तो लेट्स से हम ये जो जुलाई अक्टूबर बैच है, ओके, जुलाई टू अक्टूबर 2025 बैच है। तो जुलाई से लेके अक्टूबर, ओके, ये सेकंड सेशन है एनपीटीएल का। एक तो जनवरी से लेके अप्रैल तक होता है, वो अब फिनिश हो चुका है। अब जो सेकंड सेशन है एनपीटीएल का, वो जुलाई से लेके अक्टूबर 2025। ओके, तो लेट्स से हम जितना भी कोर्स करेंगे वो आज, ओके, एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स से हमें कोर्स करना इथिकल हैकिंग। ओके, इथिकल हैकिंग। तो आगे इथिकल हैकिंग को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन बटन, ज्वाइन बटन, उसको क्लिक करो। उसके बाद आपका सारे पर्सनल डिटेल जो भी फिलअप किया होगा वो आ जाएगा। अपना वो उठाएगा, नहीं तो आप कर सकते हो अपना फिलअप। अगर किए हो पिछले बार तो वो अपने आप डाटा को उठाएगा। तो अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइन द कोर्स। इथिकल हैकिंग, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स, क्लिक टू अनाउंसमेंट द कैप फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया। जो भी एनरोलमेंट यहाँ पे या रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका मेल को कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि हाँ सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, वेलकम टू एनपीटीएल ऑनलाइन कोर्स इक्वल हैकिंग। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मेल आ जाता है जो भी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, देन, ओके, देन और एक कोर्स इसको करेंगे। ओके, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल। ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल। तो सिमिलरली ज्वाइन बटन, ओके, तो यहाँ पे डाटा फिलअप करोगे। देन आपको अपडेटेड प्रोफाइल एंड ज्वाइन द कोर्स ये भी हो गया है। यहाँ पे देखोगे तो मेल भी आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, ओके, दो कोर्स हो गए। देन थर्ड डीबीएमएस। ये सारे के सारे कोर्स हम करेंगे इसी बार। कितना कोर्स है देखेंगे लास्ट में। तो सारे के सारे कोर्स करेंगे हम, शायद 6 कोर्सेस। लेट्स से database management system, join, next,
agree, update profile and run the course. ये भी हो गया database management system. Okay, next. Then the fourth course, in तीन course हो गया. Then fourth course, cyber security and privacy. Cyber security and privacy. Jayan, typical profile and run the course. Okay, cyber security and privacy. Then the fifth one, introduction to IoT. Introduction to IoT. Introduction to IoT. Yes, IoT. Introduction to Internet of Things. Then update performance. Then Internet of Things. Then the sixth one, that is then the sixth one, that is ML and DL fundamentals. ML and ये भी करेंगे जो है और एक भी है introduction to ML DL fundamentals and applications. Introduction to machine learning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7. And machine learning and deep learning developers. Machine learning and deep learning fundamentals and applications. Then update profile and join the course. Okay. Machine learning and deep learning fundamentals and applications. Okay. कितने कोर्स हम करेंगे इस जुलाई टू अक्टूबर सेशन में, मतलब सेकंड सेशन का जुलाई टू अक्टूबर सेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोर्सेस हम इसी बार करेंगे. ओके, तो 7 कोर्सेस इस बार हम करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड. ओके, रजिस्ट्रेशन तो हो गया हमारा. ओके, पेमेंट और बाकी पेमेंट करेंगे बाद में. ठीक है, तो आप लोग भी जो जो कोर्सेस लोगे तो
रजिस्टर कर देना। ओके, जो जो भी आप कोर्स लोगे इंटरेस्टेड हो, तो रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो चुका है, तो कर लेना। बाद में फी पेमेंट करना, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। ओके, बाद में फी पेमेंट करना, कोई बात नहीं। और ये 2 महीने के बाद ये स्टार्ट होगा कोर्स, दैट इज 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। 21 जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा। अब 2 महीना है, अब तो रजिस्ट्रेशन कर लो। ओके, सोच समझ के जो भी कोर्स लेना है पूरा शांति में सोच समझ के कर लेना। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू।